liquid or fluid? Mechanical properties of fluid. सर ग्रेविटेशन वाले के बाद में और कोई ऑनलाइन क्लास नहीं हुआ था ना? हाँ हुआ था। हुआ था? हम्म। कितना हुआ था मैकेनिक सर? एक दो क्लास हुआ है बीच में। सर वो ओके। तो अपलोडेड नहीं है, मैं देख नहीं पाया। उसमें न्यूमेरिकल्स कराया था, ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो कराया था इसी का एक क्लास हुआ था बीच में। ओके। ठीक है सर। नाउ अच्छा, सेक्शन ए बी को बोलो जल्दी ज्वाइन होने के लिए, नहीं तो हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड, दैट मीन्स बेसिकली वी स्टडी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। जब हम स्टेट के बारे में बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो तीन स्टेट हम पढ़ते हैं ना, तीन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड, number three gas, right? So when you are talking about solid, I have already mentioned what is the characteristics of solid and how the all the atoms, molecules, not molecules, all the atoms are, how they are arranged, what are their lattice structure, what are their basic structure, how many structure you can find when you are looking inside the atomic structure of solid, राइट। हमने उसमें बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक, एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक, उसके और सिंपल क्यूबिक, ये सब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, राइट, इन सॉलिड स्टेट। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज लिक्विड। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड मैटर और लिक्विड स्टेट, first of all you have to know about what is the basic characteristics of liquid. So when you are looking at the liquid molecules, you know that molecules are made up of atoms, right? Molecules are made up of atoms. So when two, three, or more atoms are arranged in a specific manner according to their valency, you are getting liquids. So liquids, when you are looking at solid, you see that all the atoms are interlinked or interrelated with each other with very high interatomic attraction force, right? तो सॉलिड का बेसिक कैरेक्टर क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्स is very high. Or when you are giving some heat energy in this material, suppose you are taking a ice cube, okay, you are taking an ice cube. So when you are taking an ice cube, you'll see that it is a solid state matter. So when you are giving heat energy to the ice, you'll see that all the ice molecules or all the water molecules that is forming a specific structure which is called ice structure, they external heat energy breaking the bond, external heat energy breaking the bond. That means when you are looking at the सर solid structure, हाँ, सर ये बिल्कुल एंट्रोपी की तरह है ना? हाँ एंट्रोपी बढ़ता है, ठीक है, जब दो पार्टिकल यस के सर। जो डिस्टेंस बढ़ता है ना, तब एंट्रोपी बढ़ता है। सो व्हेन वी आर गिविंग हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, then the molecular bond between the atoms, the heat energy basically increasing the vibration. What it is increasing? It is increasing the vibration. So you will see when you are looking at the atoms of solid, you'll see that all the atoms are interlinked with interatomic force, although they are vibrating from their mean position. What they are doing? They सर are एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी, जब तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे एंट्रोपी क्या है, मॉलिक्यूलर टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, दैट मीन्स उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। तो बाद में वो डिफरेंट चीज है। अब तुम देखो सॉलिड लिक्विड में डिफरेंस क्या है। एंट्रोपी जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे उसमें एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी ये सब करेंगे। नाउ फोकस ऑन दिस टॉपिक। So when you are looking at the atomic structure of solid, you'll see that all the atoms, they are not stable or they are not static. They are vibrating. What they are doing? They are vibrating. So you will see a little vibration
in the atoms, and these vibrations will increase when you will give heat energy from the external source. Okay. तो जब तुम बाहर से हीट एनर्जी सर इसको बेसिकली हम्म सर एटम में बेसिकली तीन टाइप की एनर्जी होंगे, एक वाइब्रेशनल, एक रोटेशनल और एक लीनियर ना सर, जो लीनियर, एक्सिस पे चलेगा। हाँ रोटेशनल एनर्जी होता है, बट बेसिकली जो जब तुम रोटेशनल एनर्जी होता है वो एक्सटर्नल हो जाएगा, बट बेसिकली यस सर। एटम्स आर फिक्स्ड। नंबर वन, दे आर फिक्स रोटेशनल, हाँ होता है, तीन टाइप का एनर्जी होता है उसमें, बट बेसिकली जो इंक्रीज होता है ना वो होता है वाइब्रेशनल एनर्जी। जब हम बाहर से हीट एनर्जी यस प्रोड्यूस अप्लाई करेंगे, दिस वाइब्रेशनल एनर्जी which is called kinetic energy also, they are vibrating from the mean position. This vibration will increase due to the external heat energy, and due to this effect, after some time, due to very high vibrating vibration or high kinetic energy, atoms will be separated from each other and they will break the bond. Okay, so they will break the bond and they will separate from each other. तो पहले क्या था, पहले एक स्टेबल स्ट्रक्चर में था जिसमें थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन था, और एटम्स क्या था, एक दूसरे के साथ अटैच्ड था। बाकी जब तुम बाहर से हीट एनर्जी प्रोड्यूस मतलब सप्लाई किया, देन all the atoms they are separated due to very high vibration or kinetic energy, and they are separated from each other, and their intermolecular distance increased, their intermolecular distance increased, right? अभी बहुत ही क्लोजली पैक्ड था इन सॉलिड स्टेट, बट जब लिक्विड स्टेट में आएगा तो दोनों ये सब में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। और दो सेकंड थिंग क्या है, इफ यू आर टेकिंग अ लिक्विड इनसाइड अ कंटेनर, sorry for the disturbance. Okay, so when you are taking the liquid material which is which have greater kinetic energy, which have they are moving with respect to each other, they are not fixed in a specific shape, right? So what is the basic character of liquid? What is the basic character of liquid? Anyone? Archisman batao, what is the basic character of liquid? No definite shape, but volume is constant. Volume is constant. They don't have they don't they not cannot acquire any definite shape. They are fluid, they can flow, right? They have space in their molecular walls, or they Hmm. have free intermolecular force, Okay. So the less basic character intermolecular of force. liquid, the basic character of liquids are all the molecules or atoms, they are moving with very high velocity, right? That means they're moving, that they have kinetic energy, they are moving from one place to another place. But in case of solid, you'll see that they are fixed in a specific structure, although they are vibrating but they are not moving. Okay, now they are free to move. In case of liquid, you'll see that the liquid molecules are free to move. And how you can prove that the liquid molecules are moving? You can prove it by Bernoulli's, सॉरी, क्या था उसमें क्या बोलते हैं उसका, एक एक्सपेरिमेंट था ना, पोलन ग्रेन्स जब तुम इसमें डालोगे, व्हेन यू आर एडिंग सम पोलन ग्रेन्स इनसाइड द लिक्विड, you'll see that uh, all the pollen grains, they are vibrating a little bit with a random vibration, or they are moving in a random way, right? इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? अ, क्या था? हाँ बताओ, एनीवन? एक पोलन ग्रेन्स, एक साइंटिस्ट ने किया था ना, पोलन ग्रेन्स का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें क्या था, पोलन ग्रेन्स आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड वन पोलन ग्रेन्स इज very very much higher in dimension with respect to the water molecules, something about 1,000 times bigger than water molecules, right? So what is the basic character of water molecules? They are moving with high speed.
Now, when you are inserting some pollen grain inside a liquid, you'll see that the liquid molecules are colliding on the surface of the pollen grain, and due to the collision and very little energy exerted on the surface of the pollen grain, inside a very high magnifying microscope, you'll see that the pollen grains is vibrating a little bit. It is moving, shifting its position, but it is very little. Okay, so these kind of phenomena you will see under the microscope, although you cannot see the molecules inside a microscope because its dimension is very 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 small, right? And the light you are using, the visible light you Oh, are using, their dimension is smaller than that of the light wave. So if one particle is sir, smaller than the light wave, one second, Satam. uh, So when you are applying some light wave which have dimension 1 into 10 to 1 angstrom, so you cannot detect a particle which is less than 1 angstrom, that is 1 nanometer, सपोज करो. तो 1 नैनोमीटर का ऑब्जेक्ट तुम 1 एंगस्ट्रॉम लाइट वेव से तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है ना, एक बेसिक बेसिक नेचर हो गया. हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर. तुम जब क्लास 12th में ऑप्टिक्स पढ़ोगे, उसमें तुम पढ़ोगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. Okay, so to resolve a water molecule, you have to use wave which have wavelength lesser than the wavelength sorry dimension of the particle. Okay, इसीलिए हम मॉलिक्यूल्स को देख नहीं पाएंगे, बट पोलन ग्रेन्स छोटा है, इसको हम मैग्नीफाई करके देख पाएंगे. बाकी इसका वाइब्रेशन से तुम्हें पता चलेगा ये जो पोलन ग्रेन्स है सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हिटिंग ऑन द पोलन ग्रेन्स एंड द ग्रेन विल वाइब्रेट एंड मूव लिटिल बिट. अब बताओ सत्यम. सर वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा था वो नैनोमीटर वाले में. वन एक बार आप नैनोमीटर थोड़ा रिपीट कर दीजिए. 1 nanometer 10 to the power minus 9 meter, and 1 angstrom is 10 to the power minus 8 सर 8 इतना डिस्प्लेसमेंट होगा सर. सर minus 8 पॉलिन meter. गेन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाँ बताओ, पोलन गेंस का सर डायमेंशन क्या पॉलिन होगा? ग्रेन. क्या होगा, 0.1 मिलीमीटर होगा. और क्या? ओके सर. सर पॉलिन ग्रेन जब हिट कर रहा है, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल जब हिट कर रहे हैं पॉलिन ग्रेन पे तो वाइब्रेशनल एनर्जी बन रही है ना सर? हाँ, देखो ऑटोमेटिकली कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट नहीं होता है, ठीक है ना. टू प्रूव द मॉलिक्यूलर मूवमेंट और टू प्रूव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, द इनिशियल एक्सपेरिमेंट व्हिच इज डन बाय यूजिंग पोलन ग्रेन्स. ओके, and you will see more effectively the molecular motion or the energy of the molecules that is they are moving by using some colloids. That means if you are inserting some milk, जब तुम थोड़ा सा मिल्क इसमें डालोगे, तुम क्या देखोगे, मिल्क में क्या होता है, proteins, fats, right? So there they milk has very small amount of fat. Okay, these fat molecules are very small with respect to the pollen grains. जब तुम इसमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, ये जो फैट मॉलिक्यूल्स है ये ज्यादा मूवमेंट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द पोलन ग्रेन्स. ओके, जब तुम इसमें मिल्क डालोगे, थोड़ा सा कलराइज करोगे इसको, और इसमें देखोगे फैट मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द पोलन ग्रेन्स. इज इट क्लियर? और सर ऑयल का क्या होगा? हाँ, ऑयल फैट मॉलिक्यूल्स वही तो ऑयल है. यस सर. मतलब ऑयल देखो सर मिल्क ऑयल में, की हाँ फैट मॉलिक्यूल्स जो है उसके साथ भी वाइब्रेशन होगा. फैट मॉलिक्यूल्स ज्यादा मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू द पोलन ग्रेन बिकॉज द डायमेंशन ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ ग्रेन्स. ओके, ये हो गया ओके सर. हाउ टू प्रूव द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ये कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना. यू कैन परफॉर्म इट अंडर यूजिंग माइक्रोस्कोप इनसाइड द लैब. क्लियर? Now, the second thing is these are the basic characteristics of liquid, and we can prove it under inside a lab. Clear? So, the basic characteristics of a liquid is that all the atoms and molecules of the liquid molecules, they're vibrating and they're colliding with the container that you are using to carry it, right? तुम जो कंटेनर लिए हो, इस ये जब वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी इसमें है, तो ये क्या करेगा, इस कंटेनर के वॉल के ऊपर
कोलाइड करेगा, राइट? यस और नो? So all the molecules, they will collide with each other, and they will also collide with the surface of the container. So if they are exerting or exerting some force on the container wall of the container, you will see that the area surface area is A, and all the molecules are exerting some force, and their net effect, you are taking a net force F, and you are taking the area A, and you'll see that F by A, you are getting a pressure P, right? You are getting pressure P. तो ये जो P प्रेशर है, ये किस लिए है? ये लिक्विड के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए है। किसके लिए है? दिस प्रेशर दैट इज कॉल्ड liquid pressure P is equals to total force exerted by the molecules on the wall of the container divided by area of the container. Clear? Force per unit area. So you are getting pressure of the liquid pressure, yeah, right? So हमने क्या देखा? And now you'll see that anything any instrument you will insert inside the liquid, you will see that there is a certain pressure due to the liquid molecules. Now the question is, uh, here you'll see that two kind सर of ये प्रेशर क्या लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए हो रहा है या लिक्विड मॉलिक्यूल पे जो डाल रहे हैं उसके लिए हो रहा है? लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर लिक्विड सर ये लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेशर दे रहा है, मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए ये प्रेशर हो रहा है या फिर जो पोलन ग्रेन्स या फिर फैट्स जो हम लोग डाल रहे हैं लिक्विड पे उसके लिए वो प्रेशर एक्स्ट्रा जा नहीं रहा नहीं, है? pressure the pressure exerted on the container or wall of the container due to any kind of fluid is due to the movement. That is the internal characteristics, that is the basic characteristics, that is to move. Due to the movement, when they are moving, they are colliding. When they are colliding, they are exerting force, and the force per unit or area is called pressure. Clear? तो ये प्रेशर क्रिएट होता है, लिक्विड प्रेशर जो क्रिएट होगा वो लिक्विड के मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए है, ठीक है ना? तो समझ में आया? As all the molecules are moving, they are colliding. When they are colliding, they are exerting force, and due to force per क्लियर? unit pressure. Clear? So now two thing you have two character huh. Now two things you have to remember. Number one, what is the pressure? What is the pressure when gravity is zero? And what is the pressure, PRE? What is the pressure when G is equals to 9.8? Clear? That is on the surface. On the surface. Clear? तो देखो, when you are taking some liquid in zero gravity means in the space station में तुम देखोगे all the astronauts, they are drinking water without glasses, right? Because when there is no gravity, the liquid will not fall down. Yes or no? Liquid will not fall down. Yes, sir. So when the liquid will not fall down, it will automatically oscillate. It will oscillate like a liquid drop, right? And it will float in the space. So when the liquid drop is floating in the space, all the water molecules inside of it, they are vibrating, they are moving their internal characters, right? To move, so they are moving. So when you will see that due to the movement, you will get liquid pressure also. Liquid pressure is there. But when you are taking these water drop on the surface of the earth, then gravity will attract it, right? This 1 liter of water in the space, this is 1 liter of water on the surface. Then you'll see that the water is coming down due to gravity, and you are taking inside a container, and the container and when you are going deep inside, or when you'll go down and down and down, you'll see that the pressure is increasing, the liquid pressure is increasing, and we will prove that liquid pressure P equals to H rho G plus atmospheric pressure, right? So
जब ग्रेविटी मतलब हम जब सरफेस के अर्थ के सरफेस के ऊपर देखेंगे, हाँ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द अर्थ, this is a different case. And when you are watching the same case when gravity is zero in the space, it is a different case, right? In the space, तो ग्रेविटी के जो इफेक्ट है इसके लिए हम डिफरेंट अलग से पढ़ेंगे। अगर ग्रेविटी जीरो है तो वाटर प्रेशर किस लिए होगा? नंबर वन, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए होगा, एंड नंबर टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होगा। किसके लिए होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होगा। तो अभी जो स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन के अंदर, इनसाइड द स्पेस स्टेशन, इट इज रेप्लिकेटेड, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको रेप्लिकेट किया जाता है। दैट मींस इनसाइड द स्पेस स्टेशन यू विल सी दैट द एयर प्रेशर इज approximately equals to the pressure of the our earth, right, on the sea level। तो उसमें क्या होगा, एक अगर लिक्विड ड्रॉप, वन लिक्विड ड्रॉप इज फ्लोटिंग ऑन द इन द स्पेस स्टेशन, सो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा उसके ऊपर, राइट। बाकी इनसाइड ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, दे विल आल्सो एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन इट। सत्यम बताओ। अच्छा सर, कुछ नेगेटिव चार्जेस भी तो वाटर ड्रॉप पे लगेंगे। जैसे सर नेगेटिव अगर कुछ चार्जेस, ह्यूज, सर जैसे ह्यूज बॉडी अगल बगल रखी है उसके, तो सर वो भी तो मतलब कुछ फोर्स रेप्लिकेट करेगी ना वाटर टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स वगैरह। मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज, अगर तुम आयंस फाइंस लगाते हो तो वो आयनाइजेशन होगा, उसमें चार्ज पार्टिकल के अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स आएगा। बट नॉर्मल वाटर में कहाँ से यस चार्ज सर। आएगा? नॉर्मल वाटर में तो कोई नहीं चार्ज नहीं नहीं। मतलब सर, नहीं नहीं सर, ऐसे ग्रेविटी तो सर जैसे, सॉरी, फ्री स्पेस में कोई भी मास किसी को अट्रैक्ट करता है सर, एक बॉडी हाँ, मास को अट्रैक्ट ऑब्वियसली करती है। ऑब्वियसली। हाँ, हाँ, सर अगर सपोज करो हमने 5 किलोग्राम दो मास, ड्रॉपलेट है, दो वाटर ड्रॉपलेट है, 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दिस टू पार्टिकल? F equals to G, 0.1, 0.1 by distance ले 1 meter, 1 meter square. Now find it out. It will be very, 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 very less amount, right? So they are attracting each other. So all the particles are attracting, but their force of attraction is very less, right? You cannot feel it. It is very small. Okay. यस सर। Okay, so the basic thing, our topic is liquid, and what is the character of liquid when you are taking the liquid in different case scenario. So inside gravity, you will see that the liquid is falling down, and liquid also exerting pressure due to the intermolecular movement, and due to gravity, you will change. You will see that the as the liquid column increases, the due to increase in depth, you will see that the pressure is also increasing, right? And we will prove the phenomena and the equation here also। So these are the characteristics, the basic characteristics when you take liquid in different cases। So हमने जो नोट्स भेजा है, फर्स्ट जो भेजा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है व्हाट इज फ्लूइड, इसका डेफिनेशन लिखा है, इट इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, राइट। सो द सब्सटेंस, यू इफ यू आर कंसिडरिंग liquid, liquid, then number one, fluid is also a liquid. Sorry, when you are taking fluid, then liquid is also is a fluid, and gas is also a fluid। So fluid are those substance which can flow. Flow means which can which have very less intermolecular forces, and the molecules can flow with respect to each other, जिसको हम बोलते हैं fluid, right? So ये first definition है। It can not withstand shearing stress। That means अगर substance fluid है तो हमने फर्स्ट क्या बोला है, दैट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी लेस। दैट मींस if you are considering two layers, that is the that is the lower layer and the upper layer, all the molecules, they are free and they have very little amount of intermolecular force। That means one layer can move with respect to other layer, yes or no? एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, फ्लो कर सकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड दो कैटेगरी में आएगा, लिक्विड में भी आएगा, गैस में भी आएगा, ठीक है ना।
So both liquids and gases are fluids because they can flow. That means अगर दोनों के बीच में बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा तो क्या होगा? जब तुम शेयरिंग फोर्स यूज करोगे, शेयरिंग फोर्स मीन्स when you are exerting some force on the upper layer and the lower layer is fixed, then the upper layer will move very easily. Yes or no? That means it will not give any restoring force backward, which is called shear force or shearing stress strain जो तुमने पढ़ा है, right? If you are considering a rubber, you are exerting some force parallel to the upper surface and lower surface is fixed. That means it will deform a little bit, but when you will withdraw the force, it will regain its original shape and size. Yes or no? यस सर। हाँ, बट लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा तुम फोर्स लगाओगे, लिक्विड फ्लो करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना? कोई बैकवर्ड फोर्स वो नहीं लगाएगा। दैट मीन्स उसमें कोई स्ट्रेन नहीं प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया बेसिक कैरेक्टर। सेकंड हमने लिखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड। इसमें तुम पढ़ोगे एटम्स मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर, इट कैन नॉट विथस्टैंड टेंजेंशियल फोर्स, स्टैंडर्ड स्ट्रेस, it does not have any definite shape. Obviously if they don't have any shape, that means they don't have any intermolecular force, then their structure is not fixed. They can move, they can bend, huh? They can mold anything you can make by using the molecules. It can withstand a force that perpendicular to the surface. One characteristics of liquid is, जब तुम क्या करोगे, सरफेस में लिक्विड है, तुमने ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहे हो, इसमें जब लिक्विड है तब लिक्विड क्या करेगा? देखो लिक्विड में हाँ मूवमेंट हो रहा है, सब कुछ ठीक है, बट ऐसा नहीं है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत गैप है, ठीक है ना? that means all the molecules, they are free to move, but they don't have any huge amount of intermolecular space or separation. They are very closely compact so that it can withstand the external force from the top surface, right? Okay. तो लिक्विड में थोड़ा मतलब बहुत ही कम ये कंप्रेशन होता है, होता नहीं है भाई, ठीक है ना? ये याद रखना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट तुम पढ़ोगे थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? टोटल फोर्स exerted by a liquid on any surface। ये जो हमने अभी बोला है क्या, as all the molecules are moving, they are exerting force. The total force exerted by the molecules on the container is called thrust, and thrust per area you will get pressure, right? समझ में आया? Liquid always exert force perpendicular to the surface. Very good. Pressure. What is pressure? Thrust acting normally per unit area is called pressure. इसके बाद तुम देखोगे प्रेशर क्या है, जब तुम एरिया को बहुत छोटा मानोगे, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड व्हेन यू विल रिप्रेजेंट बाय यूजिंग द लिमिट, यू विल गेट द लिमिट। प्रेशर का डेफिनेशन तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा प्रेशर P इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा ए टेंस टू जीरो डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए, ठीक है ना? दैट मीन्स डी एफ बाई डी ए। स्मॉल एरिया के ऊपर जितना फोर्स एक्सर्ट होगा उसका हम बोलेंगे प्रेशर। जब इसके बाद तुम जाओगे यूनिट एंड डायमेंशन, ऑलरेडी वेरी इजी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जाओगे, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर में जाओगे, इसमें दो चार एप्लीकेशन है। दैट इज कैमल वॉक इजीली ऑन द सैंड। अब देखो प्रेशर क्लास 10th में तुम लोग पढ़े हो, व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज हाउ टू इंक्रीज द प्रेशर, व्हाट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, फोर्स बाय एरिया। if you are increasing, pressure is directly proportional to force and Force pressure and is in inversely proportional to area. एरिया। इसमें तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, लाइक द नाइफ, लाइक द प्लांट नेल एंड द शार्प नेल, ये सब पढ़े हो ना? you have Yes, sir. already know all these thing, but so that I will not repeat it again. So ये सब हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन। तुम्हारा जो बैग होता है, बैग का जो स्ट्रैप होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, क्यों होता है? वही अगर 10 किलोग्राम हम बहुत छोटा स्ट्रैप में, बहुत पतला स्ट्रैप में लगाएंगे तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, अगर वो ब्रॉड स्ट्रैप में लगाएंगे तो प्रेशर घट Compression जाएगा। creative. वही बेसिक थिंग था। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ोगे डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी को हम रो लिखते हैं, मास बार यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी का यूनिट हो गया, उसका डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट जो पढ़ने वाला चीज है वो है रिलेटिव डेंसिटी। व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड, द रिलेटिव डेंसिटी, a beautiful thing you have to know about, that is density of liquid
at 4 degrees Celsius, right? I think you all know that what is anomalous expansion of water. You know that No, sir. Yes, sir. anomalous expansion of water, right? कोई एक बताओ शॉर्ट में, व्हाट इज anomalous expansion of water? अर्चिस्मान बताओ. सर जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके जाते हैं तब जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वाटर वो मतलब कांटेक्ट करेगा, उसका वॉल्यूम कम घटेगा, लेकिन वो हम्म. एक्सपेंड करते हैं. Normally, any liquid when you are taking in consideration, you'll see that when you are increasing the temperature, volume of the liquid is increasing, right? यही थार्मोमीटर में भी होता है, तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, वॉल्यूम बढ़ता है और मर्करी लेवल ऊपर जाता है, राइट? बट व्हेन यू विल सी दैट इन केस ऑफ लिक्विड, नॉर्मली व्हेन यू आर टेकिंग द लिक्विड from 0 to 4 degrees Celsius, you'll see that the volume is decreasing, and after that the volume is increasing. So at 4 degrees Celsius the liquid is contracting and the volume is minimum here, right? So when the volume getting minimum, the density is maximum, yes or no? When the volume is decreasing, the density is increasing. And why this kind of phenomenon is happening? Anyone? Density is inversely proportional to volume. हाँ. बट जब तुम 4 डिग्री पे आ रहे हो, देखो नॉर्मली आइस का वॉल्यूम ज्यादा है ना, 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, राइट? तो इसमें तुम थोड़ा सा सर्च कर लेना, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक से फिनोमेना है, जब आइस से वाटर लिक्विड लिक्विड फॉर्म होता है ना, तब इन दोनों के बीच का जो मॉलिक्यूलर गैप है वो थोड़ा सा घटता है, ठीक है? वो घटता है, कब तक सर घटता वो है? चार. सॉलिड हाँ. सर वो सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में आएगा तो उन लोगों के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा गैप बढ़ेगा. हाँ, नॉर्मली आइस का तो वॉल्यूम सर लिक्विड से ज्यादा है, ठीक है? 1/10 वॉल्यूम ज्यादा है, because of the separation of the molecules. When they are forming solid, their molecular separation is increasing, but when they are forming liquid, their molecular separation is decreasing, and this decrease in volume is continue up to 4 degrees Celsius. Clear? So when you are at the point of 4 degrees Celsius, you will get a minimum volume of the liquid. After that, the volume is increasing, and due to this phenomena of irregularity of volume increment, it is called anomalous expansion of liquid. एंड इसीलिए जो आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन में जितने भी वाटर बॉडी है, ठीक है ना, ऊपर -72 डिग्री सेल्सियस में सब कुछ बर्फ जम चुका है, पर नीचे का जो पानी है वो कितना है, 4 डिग्री में, तब भी मछली और जो है वाटर बॉडी इसमें दे कैन लिव, राइट? इट इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ नेचर, so that they can live inside the very thick layer of salt. Clear? तो ये हो गया एनोमलस एक्सपेंशन. तो इसमें हम 4 डिग्री सेल्सियस क्या लिखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी का जो डेफिनेशन है उसमें हमने क्या लिखा है, इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 4 डिग्री सेल्सियस. कोई भी सब्सटेंस तुम लेते हो उसका जो डेंसिटी होगा, सपोज करो एक्स, उसको किसके साथ रिलेशन इसमें करोगे, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. Relative density of any substance with respect to the density of liquid water at 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो हम रिलेटिव पाएंगे, किसके रिलेटिव में पाएंगे, वाटर के रिलेटिव में पाएंगे, ठीक है? इट इज अ रेशियो. क्लियर? ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट? सेक्शन सर ए. अभी फिलहाल तो सर हमारे क्लास से प्रेजेंट है आर्यन, भार्गव, बोधिसत्व, दिबार्गा, मुस्कान, प्रियंकर और सुरंजन और मैं. सेक्शन बी, अर्चिस्मान, पीहू, शिवम. ओके,
चलो ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा ये सब बेसिक चीजें था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम जो देखेंगे, न्यू पेज। नेक्स्ट इसके बाद तुम जब आओगे तुम तो देखोगे पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में तुम पढ़ोगे, उसमें जो डेफिनेशन लिखा है प्रेशर, पास्कल ने जो लॉ दिया है, क्या दिया है, प्रेशर इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, राइट। प्रेशर exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equal in all direction। दैट मीन्स तुम अगर एक कंटेनर में देखोगे, अगर एक वाटर लेवल में देखोगे, so when you are taking any instrument and then you are taking this instrument inside the liquid, you'll see that the pressure is uniform in all direction inside the liquid at a definite level, right। इसमें भी प्रेशर इस डायरेक्शन में भी सेम होगा, इस डायरेक्शन में भी सेम होगा, नीचे के डायरेक्शन में सेम होगा, ऊपर के डायरेक्शन में भी सेम होगा। दैट मीन्स अगर तुम लिक्विड के ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, बाहर से हो सकता है, एटमोस्फेयर से हो सकता है, इनसाइड लिक्विड हो सकता है, ये क्या होगा, ये प्रेशर यूनिफॉर्मली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। जब थोड़ा सा प्रेशर चेंज होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से हो सकता है, हाँ, टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, जब भी प्रेशर चेंज होगा ड्यू टू एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, दिस चेंज इन प्रेशर will uniformly distribute inside the liquid at all point at a specific level, okay, ठीक है। सेकंड, थर्ड इज प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम at all point if we ignore gravity। अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर करेंगे तो हर एक पॉइंट पे लिक्विड प्रेशर क्या होगा, सेम होगा हर एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। ये हो गया पास्कल्स लॉ। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए ये तुम्हें पढ़ना है। नेक्स्ट आएगा प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ? दैट इज द प्रेशर इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन ऑल फेसेस। इसके लिए हमने क्या माना है, इनसाइड द लिक्विड वी आर टेकिंग अ ब्लॉक, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। ऐसा एक ब्लॉक लिया था, इसमें क्या था, इसमें हमने एक प्रूफ करेंगे क्या, दैट इज द प्रेशर इज सेम फॉर ऑल थ्री सरफेसेस। ये जो तीन सरफेसेस है, दैट इज सरफेस, हाँ, ए बी सी, हमने क्या नाम दिया था, ए बी सी। और इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा इस सरफेस के ऊपर, ये फोर्स जो है एफ बी, इस सरफेस के ऊपर फोर्स है एफ ए, एंड इस सरफेस के ऊपर फोर्स है एफ सी, ठीक है। सो these थ्री forces are exerted by the molecules of the liquid on this three dimensional object which is kept inside a liquid container, clear। so ये जो एफ बी है, we have taken two components of एफ बी, that is one component is x and one component is y। if you are taking this angle is theta, this is fb, you'll see that clearly this will be fb cos theta and this will be fb sin theta, clear। तो ये जो फोर्स एफ बी है इसका दो कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये एक एंगल के एंगल में है, थोड़ा सा थीटा डिग्री के साथ है, तो ये परपेंडिकुलर के साथ थीटा डिग्री के साथ है, तो इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा एफ बी कॉस थीटा। और एफ बी कॉस थीटा किसको कॉम्पेंसेट करेगा, नीचे के जो फोर्स है उसको कॉम्पेंसेट करेगा। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा एफ बी साइन थीटा, वो किसको कॉम्पेंसेट करेगा, एफ सी को करेगा, ठीक है ना। तो you can write एफ सी is equals to एफ बी sin theta and एफ ए is equals to एफ बी cos theta, ठीक है, क्लियर। नाउ और जो एरिया है, इसका जो एरिया है टोटल जो ए बी जो है, दैट इज ये जो सरफेस है ना, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एरिया इज आल्सो अ वेक्टर। सो व्हेन यू आर टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ, इफ दिस इज थीटा, सो इट विल बी ए बी कॉस थीटा, ए सी, हाँ एक सेकेंड, साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ। तो ये इसको अगर हम ए मानते हैं तो ए क्या होगा,
ए स्मॉल ए, ये होगा एफ ए बी, दैट इज ये जो बी है इसका जो कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा ये हो गया कॉस कंपोनेंट, ये हो गया कॉस कंपोनेंट, ये हो गया साइन कंपोनेंट। तो इसका हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा और इसका हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। क्लियर? तो तुम्हें क्या मिलेगा, ए मिलेगा ए बी कॉस थीटा और ए सी मिलेगा ए बी साइन थीटा। क्लियर? Now, when you are taking the pressure into your consideration, so FB by AB, FB sin theta by AB cos theta, AB cos theta, ये तो आएगा ना, सॉरी AB sin theta, AB sin theta क्या है, AC आएगा, तो AB sin theta, दो sin theta कट जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा, FB by AB। क्लियर? क्या गलत हो गया क्या? एक सेकंड, एफ सी बाई एफ बी साइन थीटा इज एफ सी, सॉरी एफ सी एंड ए बी साइन थीटा इज ए सी। तो क्या मिलेगा, एफ सी बाई ए सी। सिमिलरली तुम्हें मिलेगा एफ बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए बी कॉस थीटा एंड यू आर गेटिंग एफ बी बाई ए बी। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा बताओ? अगर ये दोनों कट जाता है तो एफ बी बाई ए बी, एफ बी बाई ए बी एंड एफ बी बाई ए बी इज इक्वल्स टू एफ सी बाई ए सी एंड एफ बी बाई सॉरी एफ सी बाई ए सी, और ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा विच इज दैट ए और ए बी एफ ए बाई ए, एफ ए बाई ए। तो तुम्हें क्या आएगा, अल्टीमेटली विल गेट एफ ए बाई ए, एफ बी बाई ए बी, एफ सी बाई ए सी। क्लियर? दैट मीन्स प्रेशर जो आएगा वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना? प्रेशर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू पी बी PB is equal to इक्वल्स टू PC. पी सी। दैट मीन्स तीनों प्रेशर इक्वल हो जाएगा बाय अप्लाइंग द component form of the force. Clear? Anyone have any doubt in this formula? So this is the proof of the Pascal's law, that is pressure is uniform in all direction and it will be distributed when you are exerting external pressure on the liquid, it will be distributed uniformly in all direction. Clear? चलो, इसके बाद जो नोट्स में लिखा है वो क्या है, जो थियरी में है वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, experimental verification. So when you are trying to verify, तो ये क्या है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं इन द हाइड्रोलिक प्रेशर। ओके, so when you are see the hydraulic pressure, you'll see that when the amount of force you are applying here, it will automatically be transmitted to another point in the liquid. That means you have two cylinder, two piston. Here you are applying force small f and here you are getting force capital F. तो हम बहुत कम फोर्स यूज करेंगे, इससे बहुत ज्यादा हेवी मैसिव ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। और इसके अंदर होगा एक लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल वेरी हाई डेंसिटी लिक्विड होगा। ओके, इसमें यू आर अप्लाइंग फोर स्मॉल एफ इन एरिया, हाँ एरिया क्या था, स्मॉल ए था ना। ओके, जो भी है, जो फोर्स तुम यहाँ पर अप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली इस लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, it will be distributed inside the liquid and the pressure at the point A will be pressure at point B. One second.
सो तो हम अगर एफ फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर तुम्हें कितना फोर्स आएगा, कैपिटल एफ क्यूब आएगा. सो व्हेन यू आर अप्लाइंग एफ फोर्स हियर, here the area is a, that means here small area, right? अगर एरिया स्मॉल होगा तो तुम्हें यहाँ पर प्रेशर क्या मिलेगा, P1 मिलेगा, फोर्स F बाई ए. और यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा, ये P2 आएगा, कैपिटल F बाई कैपिटल B. इसका एरिया हम B मान लिया है, ठीक है ना. तो देखो अगर A का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है एंड B का वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर्ड है, तो बताओ स्मॉल एफ अगर 10 न्यूटन होगा तो कैपिटल एफ कितना आएगा, क्योंकि P1 P2 सेम होगा, राइट. P1 should be equals to P2 according to the Pascal's law. That means F by A would be equals to F by B, right? So capital F equals to 100 है. F by A into B. तो capital F का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 100 न्यूटन. 100 आएगा, क्योंकि स्मॉल f का वैल्यू हो गया सर 10, 100. A का वैल्यू 1 into 10, you are getting 100. तो देखो तुमने कितना फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन. कितना अप्लाई 10 किया न्यूटन. और 10 कितना फोर्स न्यूटन. पाया, 100. 100 न्यूटन. 100 न्यूटन. इसमें तुम्हें क्या करना पड़ा, तुमने सिर्फ एक पिस्टन को बड़ा बनाया, एक पिस्टन को छोटा बनाया. ये सुनो, ये सुनो. Yes. तो अगर हम, यस सर. हाँ, अगर हम इसके ऊपर एक 10 किलोग्राम का वेट रखेंगे तो ये 100 किलोग्राम का वेट को उठा सकता है. ये सुनो. तो इसी को यस हम सर. यूज करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के अकॉर्डिंग. कोई भी मशीन और जिसका पावर कम है इसको हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक में, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा. और इसके थ्रू हम बहुत हेवी मैसिव ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैकेनिज्म. इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट. सो हियर you'll think that the small amount of force how they can replicate with a very high amount of force. is it uh, is it following the law of conservation of energy or not? Anyone? Is it following the law of conservation of energy or not, as you are creating a very huge amount of force from very small amount of force? So obviously it is following the law of conservation of energy, because when you will see or look at this piston, which is a small piston, you will get a very long displacement, but here you will get a very short displacement, right? So if your small d is 1 meter, so you will get a work done W equals to small f into small d. Yes or no? 10 Newton into 1 meter, that is 10 joule. This should be equals to W prime, which is capital F into D prime. So capital F into D prime, capital F का वैल्यू क्या है 100, तो D prime कितना आएगा 10 by 100, that is 1 by 10, which is 0.1 meter, that is 10 centimeter. Okay, ठीक है. यस सर. Yes, sir. यस तो सर. ये नीचे आएगा 1 मीटर और ये ऊपर जाएगा 10 सेंटीमीटर. तो इसने ज्यादा वर्क किया है, मतलब ज्यादा वर्क नहीं, एक सेम ही वर्क किया है, बट इसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आएगा, राइट, टू इक्वलाइज द वर्क डन. सो यू ऑलवेज गेट इक्वल वर्क डन in these two cases, although the force is increasing, but you are getting equal work done. This kind of phenomena you will also get in the lever system, फर्स्ट सेकंड थर्ड लीवर, राइट. लीवर उसमें भी तुम देखते हो, लीवर में तुम क्या एक स्टॉप रखे हो, इसमें एक हेवी मैसिव ऑब्जेक्ट को यू कैन पुल, और by using a very small amount of force you will see that the displacement here is greater with respect to the displacement here. So d is greater than d prime. Okay, फर्स्ट इसमें क्लास भी लीवर. इसमें भी वर्क डन क्या होता है, इक्वल होता है. तुम्हें लगता है बहुत हेवी मैसिव ऑब्जेक्ट हम बहुत ही इजीली उठा पा रहे हैं, बट वर्क डन क्या होता है, इक्वल होता है. इसमें एनर्जी वायोलेशन कभी भी नहीं होता. इज इट क्लियर? यस सर. तो सेम काइंड ऑफ phenomena is happening here. You should know that, which is a topic of class 10th. So uh,
तो ये हो गया अप टू हाइड्रोलिक प्रेशर एंड हाउ एनर्जी कंजर्वेशन. And if anyone asks you, is the energy conservation is possible inside hydraulic pressure? Yes, obviously. In any kind of physical activity, in any kind of physical or chemical reaction, always remember, always all of the reactions are following the conservation of energy and conservation of momentum, and all these phenomena is happening here, right? So no one is violating any kind of conservation law. Okay. तो ये हो गया फर्स्ट, जो फर्स्ट पेपर जो हमने भेजा है. सेकंड में जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम एंड व्हाट इज द प्रेशर एट अ डेप्थ एच. ये हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट डे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. क्लास नोट 10 से कंटिन्यू करेंगे. ओके. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हो. सर इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल ले लीजिएगा पास्कल्स लॉ पे. ऑब्वियसली न्यूमेरिकल आएगा, पहले थ्योरी खत्म कर लेते हैं, ठीक है? ओके. न्यूमेरिकल बहुत आएगा. बाकी थोड़ा सा हम इसमें फंसे हुए हैं, थोड़ा सा काम भी था, इसलिए रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना? कुछ प्रोग्राम चल रहा है घर पे भी, और ठीक है, हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा. ए फ्लूइड. तो हम इसका पीडीएफ भेज दे रहे हैं. ओके. तो ओके थोड़ा सर, जो हैप्पी न्यू जो ईयर हमने एडवांस. क्लास वर्क भेजा है वो प्रॉपरली क्लास वर्क में लिख लेना. बाकी इनिशिएटिव पढ़ो और एक अच्छा बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है? कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सर सकते. सर हाँ, सर सर हैप्पी बोल न्यू रहा था कि ईयर. एक एक करके बताओ. देवर का बताओ. सर बोल रहा था कि सर हाइड्रोलिक ब्रेक है क्या सर, इसी बेसिक के सिलेबस में सेम क्या? सेम सेम, हाँ सेम, हाइड्रोलिक प्रेशर के ऊपर सर हाइड्रोलिक ब्रेक सर वो सेम मैकेनिज्म जो हमने अभी बोला. हाइड्रोलिक लिफ्ट ब्रेक में तुम थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, वही फोर्स हायर पिस्टन में जाके डिस्क ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक में जाके लगता है. उसमें पिस्टन का एरिया ज्यादा होता है, ठीक है ना? ओके सर। सत्यम बताओ. सर हैप्पी न्यू ईयर एडवांस है. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर. ओके, ठीक है. नया साल नए एनर्जी के साथ शुरू करो. बाकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी शॉर्टकमिंग है, जो पास्ट है वो पास्ट है, ठीक है ना? जो आएगा वो अच्छा आएगा. ऐसा एक अप्रोच लेके चलो, बाकी सब ठीक होगा. क्लियर है? थैंक यू सर. ठीक है, चलो. थैंक यू सर। गुड नाइट. गुड नाइट सर. ये प्रियंकर कंसा क्लास रिकॉर्ड किया है ना? थोड़ा सा लिंक दे देना, ठीक है ना? ओके, ठीक है, चलो, गुड नाइट. गुड नाइट सर। थैंक यू